Exercise 4.3, 4.2, question 1. Which one of the following option is true? This we have already done question 1, sorry. For 4.3, sorry. 4.2 तो हो गई ना? Yes, ma'am. 4.3, Yes, ma'am. question 4.3. okay, okay, right. Exercise 4.3, question 1. X plus y equals to 4. Okay. So we have already seen how to plot graph. For that we make one table. In first column we write x and y and we find few more values, 3 or 4 more values we can find. Okay, suppose I am choosing x as 0. So Yashvi, tell me x 0 है तो y क्या होगा? Ma'am, 4. 4. Suppose y is 0, y 0 है तो x क्या होगा? Ma'am, 4. 4. Suppose x is 1, what will be y? Ma'am, 4. 4 कैसे होगा? x Ma'am, 1. sorry, 3. तो y क्या होगा? y will be 4 minus 1, 3. x 2 है तो y क्या होगा? 2. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप इज मेकिंग x एंड y एक्सिस. इसमें हमको हमेशा ये ध्यान रखना है, दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव y एक्सिस. Marking 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -1, -2 and so on. Anyway, we don't need negative values, so I'm not like writing all the values there. If x is 0, ये point है 0, 0. जब x 0 है, y की वैल्यू है 4. तो ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया. जब x 4 है, x 4 है तो y 0 है. x 4 है और y 0 है, मतलब पॉइंट कहाँ लाई करेगा? x एक्सिस पे. ओके. जब x 1 है तो y 3 है. x 1 है और y 3 कहाँ है? यहाँ है. y 3 है. तो y 3 and x 1. So this will be the point. x1 and y3, x1 and y3. आ रहा है समझ में यशवी को? Yes, ma'am. Okay. Then if x is 2, y is also 2. So this will be the point. So basically we got some points. So we'll join this all points and this will be the graph of this equation. Yes, ma'am. Okay, ma'am. करो इसको complete. Okay. Yes, Manav, you can also see third part. Y equals to 3x. Suppose we have to plot this graph. Okay. So first of all, we'll make a table. Suppose x is 0. What will be the value of y if x is 0? Ma'am, it will also be 0. 0. Yes, ma'am. ठीक है. तो जब भी 0, 0 अगर किसी का सोल्यूशन है तो मतलब वो लाइन कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से. ठीक है. ओरिजिन मतलब यहाँ से. So it will pass through this point. ऐसे ऐसे कैसे भी पास होगी, लेकिन ये ओरिजिन से पास होगी जब भी उसमें 0, 0 कोई पॉइंट आएगा. नेक्स्ट सपोज x is 1. What will be the value of y? Yes, Manav? Ma'am, 3. 3. X is 2. What will be the value of y? Ma'am, then 6. 6. Okay. If x is Yes, minus ma'am. 1, what will be the value of y, Yashvi? Ma'am, please wait. Ma'am, -1/3. अरे x minus 1 है तो y क्या है? y है 3 into x. तो 3 into -1 तो क्या होगी इसकी वैल्यू? Okay, ma'am. Ma'am, -3. -3. Now plotting this. So for plotting, positive x-axis first of all, then negative x-axis, positive y-axis,
negative y-axis. 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6. Okay, now we'll locate the points. 0 0 first point क्या है? 0 0, तो 0 0 is this point. Next है 1 3, x की value 1, y की value 3. Okay, so this is the point 1 3. x की value 2, y की value 6. Okay, x की value 2, y की value 6. x की value -1, y की value -3. So this way. Okay, so we got all the points. We have to just join this all points and make a straight line. Okay, so this will be the graph. Clear? Ma'am, my mistake was that in what is x in second part what we have to do? Okay, second part also will do. X minus y equals to 2. We'll make a Yes, ma'am. First of all, we'll make a table. X, y. When x is 0. When x is 0, what will be the value of y? Basically, -2 equals to y लिख सकते हैं. इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए. We can write x minus 2 equals to y. अब x 0 है. यहाँ पे x 0 पुट करो तो y क्या आ रहा है? -2. x 1 पुट करो. 1 minus 2 is -1. It is coming -1. If x is 2, 2 minus 2 is 0. Okay. Then x is 3. 3 minus 2 is 1. So this way we'll obtain various values. Now, plotting the graph. For plotting the graph, first of all, marking positive x-axis, negative x-axis, positive y-axis, negative y-axis. Then 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 0, -2. When x is 0, okay, 1 minute, I have put 0 here, one mistake. ये है 0 तो, okay. 1, 2, 3, 4, 5. When x is 0, y is -2. So x is 0, y is -2. X is 1, y is -1. X is 1, y is -1. X is 2, y is 0. X is 3, y is 1. So yeah. Now we'll join this all points. This will be the graph. Okay, next question. Question 2. Give the equation of two lines passing through 2, 14. How many more such lines are there and why? Okay, so we have to write two equations passing through this point. ठीक है, तो हम just ऐसे लिख सकते हैं. Suppose I write x plus y equals to what should be the answer? x अगर 2 रखेंगे, y 14 रखेंगे, तो क्या आएगा रिजल्ट? Ma'am, 17. Ma'am, 16. 16. Okay. If I write y minus x, तो क्या आएगा रिजल्ट? 14 minus 2, 12. तो ये दो इक्वेशन. 12. ओके, कोई भी इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो 2x plus y. तो बस रिजल्ट तुमको ये सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करना है. 2 2s are 4 plus 14, that is equal to 18. So any of this equation you can write. समझ में आ रहा है कैसे करना है? Yes, ma'am. Okay. Now, how many more such lines are there? Infinite lines are there. Okay.
infinite lines are there. Okay. And why? Because there can be infinite lines passing through a point. Yes, ma'am. Okay. Okay. Now copy this. Question 3. If a point 3, 4 lies on the graph of equation 3y equals to ax plus 7, find the value of a. Oh, okay. So basically this point lies on this line and we have to find the value of a. Okay. So what we'll do, as 3, 4 lies on the line, so putting x equals to 3, y equals to 4. So it will be 3 into 4 equals to a into 3 plus 7. So 12 minus 7 equals to 3a. 5 equals to 3a, or a equals to 5 upon 3. Sorry, sorry. Ma'am, in my book is also it is cut in my book. It is cut in your book. Yes, ma'am. वैसे linear equation in two variables, let me check again. Now question 4, a taxi fare in a city is as follows. Okay, for the first kilometer the fare is ₹8, and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking distance traveled as x kilometer and total fare as y, write a linear equation for this information and draw the graph. Okay, so distance covered is equal to x kilometers and total fare, let total fare equals to ₹y. Okay, now here actually we have to think this way. Suppose कोई person है, वो सिर्फ 1 किलोमीटर गया, तो वो कितने पे करेगा? ₹8, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 लग रहे हैं. ठीक है. कोई पर्सन है 2 किलोमीटर गया, तो वो कितना पे करेगा? फर्स्ट किलोमीटर का तो ₹8, और फिर इसके बाद जो भी किलोमीटर्स है उसके लिए ₹5 पर किलोमीटर. तो मतलब 2 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर तो ये हो गया, 1 किलोमीटर ये हो गया. 1 किलोमीटर का चार्ज है ₹5. एक पर्सन है वो 3 किलोमीटर गया, तो वो क्या पे करेगा? ₹8 प्लस नेक्स्ट वाले, फर्स्ट वाले के किलोमीटर के लिए तो ₹8, और नेक्स्ट वाले जो 2 किलोमीटर है उनके लिए 2 इंटू ₹5, क्योंकि ₹5 पर किलोमीटर उसके बाद चार्ज है. ओके, सो क्लियर है कैसे पे हो रहा है? मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 चार्ज हो रहा है, उसके बाद जो भी किलोमीटर्स है उनके जितने भी किलोमीटर्स हो रहे हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है. तो हाउ कैन आई मेक द इक्वेशन? फेयर इक्वल्स टू 8 प्लस जितना भी डिस्टेंस है उसमें से 1 माइनस कर दो इंटू 5. दिस विल बी द इक्वेशन. ओके, सो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. Now first of all we have to make it a standard linear equation, so we'll multiply this 5x minus 5, so y equals to 5x plus 3. This is the equation, or we can write 5x minus y plus 3 equals to 0. This is the linear equation in two variables. Okay, now we have to plot the graph. Okay, so first of all write this, copy this, and then I'll tell you how to draw the graph. Now 5x minus y plus 3 equals to 0. If we have to plot this graph, first of all we'll make a table. First column will write x and y. अब यहाँ पे हम here you can see y can be written as 5x plus 3. अगर हम y को दूसरी साइड ले जाते हैं तो y क्या हो जाएगा?
5x प्लस, plus ठीक है। अब x जब 0 है तो y की क्या वैल्यू होगी यशवी? x जब 0 है y की क्या वैल्यू होगी? ma'am. Yes, ma'am. मैम 3. 3, गुड, क्योंकि 5 into 0 is 0, y is 3. Yes, ma'am. Okay, x is 1, then what will be the value of y? मैम 8. 8. Okay, x is minus 1, what will be the value of y? मैम -2. Minus 2. Okay. X is minus 2, then what will be the value of y? Ma'am, मैम -7. Minus 7. क्योंकि y equals to 5 into minus 2 plus 3. तो ये हो जाएगा minus 10 plus 3, that is equal to minus 7. Okay. ऐसे हम सारी वैल्यूज ऑब्टेन कर लेंगे, कोई भी 4 वैल्यूज will make graph. So here so positive x-axis, negative x-axis, positive y-axis, negative y-axis, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, and minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Now plotting these points, 0, 3. x जब 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो ये होगा पॉइंट. x जब 1 है, तो y की वैल्यू 8, means this will be the point. Yes, ma'am. When x is minus 1, y is minus 2. So this will be the point. And when x is minus 2, y is minus 7. That means this is the point. Okay, here. Now we'll join this all points and this will show the graph of this line.